Assalamu alaikum everyone. So we were talking about some lightning effect, and whenever we were talking about the lightning effect, तो हमने देखा कैसे there can be some phenomena of lightning, and what are the different consequences of the lightning. So whenever you are talking about the lightning, we said that there can be some different cases. For example, there can be some stroke to the phase conductor, and there can be some stroke to the tower. There can be some stroke to the earth wire, and then there can be some strokes to the nearby objects. Now let's see one by one. If you're talking about the positive stroke properties, so you can say that there will be very less probability of the positive strokes or due to the positive charges in practical life, and it is about the 10%, and their rate of rise are very lower for the negative, typically for a factor of 5 or so. So the charge load is usually greater. Maximum charge load is 300 coulomb. So over voltages due to the phase conductor, to the tower and to the earth wire. जब भी आपकी कोई जो लाइटनिंग इफेक्ट है वो किसी भी स्ट्रोक किसी भी फेस कंडक्टर पे आती है, तो आपकी जो फॉर एग्जांपल इट विल डिपेंड कि किधर वो आगे स्ट्रोक आपकी हिट कर रही है. इट कैन बी इन बिटवीन द लाइन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, एंड इट कैन बी ऑन द अदर साइड. टिपिकली अगर हम बात करें कि तो जब भी आपकी लाइटनिंग करंट आती है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट विल डिवाइड इनटू टू हाफ्स ऑन ईदर साइड. आगे जाके हम देखेंगे कि कैसे वो इक्विवेलेंट हम डायग्राम बनाते हैं, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी जो सर्ज इम्पीडेंस है इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर नॉर्मल इम्पीडेंस. सर्ज इम्पीडेंस को हम कि आपकी जो पावर फ्लो में जो भी रेशियो है या पावर फ्लो को जो भी इम्पीडेंस फेस करना पड़ रही है उसको हम सर्ज इम्पीडेंस का नाम दे देते हैं. इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट, और इसको हम सिल भी कहते हैं. और सर्ज इम्पीडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर नॉर्मल इम्पीडेंस. एंड और ये भी एक और बात भी हम कह सकते हैं कि जो टिपिकल जो सर्ज इम्पीडेंस है ट्रांसमिशन लाइन की वो नॉर्मली 300 ओहम होती है. और अगर फॉर एग्जांपल 20 किलो एम्पेयर की आपकी करंट है तो इट मींस कि it will divide into two halves, 10 kilo ampere on one side and the 10 kilo ampere on the other side, because we are saying that आपकी जो करंट है हम अज्यूम कर रहे हैं वो दो हाफ्स पे डिवाइड हो रही है, बिकॉज आपकी इम्पीडेंस है वो दो हाफ्स में कन्वर्ट हो रही है. सो अगर 20 किलो एम्पेयर करंट है देयर विल बी 10 किलो एम्पेयर ऑन ईच साइड. और अगर अब वोल्टेज की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू 1/2 Z into I/2 on one side. Similarly 1/2 Z into I/2. I/2 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि करंट भी डिवाइड हो रही है. 1/2 Z into I/2 on the other side. So अगर आपकी फॉर एग्जांपल हम सर्ज इम्पीडेंस जो है ट्रांसमिशन लाइन की हम 300 अज्यूम कर लेते हैं, तो यू विल गेट 300 divided by 2 multiplied by 10, and it will be equal to 1500 kilovolt. I'm again repeating that it will be equal to 1 divided by 2 multiplied by 300 हमने अज्यूम की है जो सर्ज इम्पीडेंस है, और 10 किलो एम्पेयर एक तरफ फ्लो कर रही है, तो इट देयर विल बी सम 1500 किलोवाट. और इसी तरह जो आपकी लाइटनिंग करंट है जो फ्लैश ओवर है किसी भी टावर में, देयर विल बी अ इंसुलेटर अंटिल अ ग्राउंड पाथ इज ऑब्टेन्ड. और जो लाइटनिंग स्ट्रोक आपकी नियर बाय स्टेशन में अगर आती है तो इट में डैमेज सम सबस्टेशन इक्विपमेंट. सो हम नॉर्मली सर्ज अरेस्टर यूज करते हैं फॉर दिस पर्पस. और जो टावर की हाइट है वो नॉर्मली हम ग्रेटर रखते हैं फेस कंडक्टर में, फेस कंडक्टर कंपैरेटिवली. सो देयर आर वेरी रेयर चांस ऑफ लाइटनिंग और द फेस कंडक्टर.
और देयर आर हाईएस्ट वर्किंग वोल्टेज की अगर हम बात करें तो चाइना में अप टू 1000 kV है। तो एल्यूमिनियम टावर्स और जो कंडक्टर्स हैं पर फेस हम कंपैरेटिवली टावर्स की हाइट बहुत ज़्यादा रखते हैं। This is the formula of the surge impedance which I were talking about, and this is your how your current is exponentially increasing or decreasing depending upon the situation, and this is the formula of your voltage at the ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए। अगर आप सर्ज इम्पीडेंस अपनी 400 अज्यूम कर रहे हैं, देयर विल बी सम 4 मेगावाट। दिस इज अनदर एग्जांपल कि आपकी जो करंट है इंक्रीज कर गई है तो आपकी जो वोल्टेज है वो चेंज हो। 4 megavolt is very high voltage. You can say much higher than the insulation level of the high voltage lines. So shielding is very important, and shielding is done with the help of one or two wires running over the conductors, and these wires protects the direct strokes on the line. So this is how you are placing some shield wire over the transmission line here. Here this is phase A, this is phase B, and this is phase C. और अगर आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो वुडन पोल्स में विदाउट द अर्थ लाइन but with the insulators earthed, then the voltage will appear across the insulator. So this is now how your effect of the lightning to a phase conductor is happening. और आप देख रहे हैं कि जब लाइटनिंग आती है इट इज ट्रैवलिंग अलोंग दी ट्रांसमिशन लाइन। यही मैं बात कर रहा था कि आगे जाके विद द हेल्प ऑफ सम लेटेस्ट डायग्राम हम देखेंगे कि कैसे जो वोल्टेज है वो ट्रैवल करती है, रिफ्लेक्ट भी करती है और रिफ्लेक्ट भी करती है। और अगर किसी भी नोड पॉइंट में किसी भी पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम अपनी इंसुलेशन है वो भी डिजाइन कर सकते हैं। If the transmission line is of the wood pole construction without a continuous earth line and with the insulators unearthed, and then there is a possibility of a face-to-face flash as well. Or in conditions में जो potential difference है between the phase conductor, it will struck, and any neighboring conductor will have taken into account coupling between the conductors from the given value given previously with the help of this formula. Here E is the voltage cross face to face, flashover may take place, and K is known as coupling factor, or ratio of the induced to inducing potential on the non-struck and the struck conductor respectively. Normally it is 0.1 to 0.2, although जो corona effect है ये हमने power distribution में already पढ़ चुके हैं क्या होता है। It can increase this value considerably, and values can be as high as 0.45. So only is the case of unearthed insulator and the wooden poles. So now the second thing is whenever there is some stroke to the tower, जब भी हम stroke to the tower की बात करेंगे तो हम footing resistance की बात करेंगे। So footing resistance क्या होती है? You should know this. For example, this is your tower. और इधर से आपका कोई कंडक्टर पास आउट कर रहा है, तो दिस रेजिस्टेंस एट द बॉटम ऑफ द टावर इज नोन एज द फुटिंग रेजिस्टेंस। फुटिंग रेजिस्टेंस की बात करें तो इट कैन बी बिटवीन 1 to 2 ओहम, और ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो वोल्टेज है जो भी आपके टावर का जो टॉप है, क्योंकि आपका जो लाइटनिंग स्ट्रोक है वो टावर पे पड़ी है, तो देयर कैन बी अर्थिंग वायर एंड देयर इट कैन बी विदाउट अर्थिंग वायर। तो जो आपके टावर रेजिस्टेंस है वो आपकी फुटिंग रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, और टावर में से आपकी करंट कितनी फ्लो कर सकती है। आपको पता है E = IR + L dI/dt।
So this is your tower resistance and this is some RL here. अगर for example अगर आपकी resistance 2 ohm है, आपकी current for example जो lightning stroke है उसकी 20 किलो एम्पियर है, तो अगर आप E is equal to IR plus LDI by DT में पुट करें तो you will get 40 किलो वोल्ट, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है. So for the 500 kV per phase line transmission line, voltage up to 400 800 kV is not dangerous and it sustains 2.7 times 500 kV. वर्स्ट केस तब होगा जब आपकी वोल्टेज जो है वो 1600 किलो वोल्ट तक चले जाएंगे, और there will be some back flashover and there will be some slight voltage rise and turn out immediately with some slight surge on the line in a very short time. So this is your how you can calculate your voltages. This is your current. You are seeing here हम बार बार अल्फा और बीटा की बात करते हैं, तो अल्फा represents the voltage at the top of the tower rises above the earth level and it will be equal to voltage to which the top of the tower rises above the nearby earth potential, and EI is the voltage induced by the lightning stroke here on the phase conductor. So this is your strokes to the tower, और ये हम बात कर रहे हैं कि there are chances that they will be, अगर जो voltage है वो ज़्यादा rise कर जाते हैं at the top of the tower, so there are chances that there can be some path of the flash towards the conductor, and this is known as the back flashover. So you can say that if the value of ET exceeds the line insulation strength, then a flashover occurs from the top of the tower to the phase conductor. This type of failure is known as back flashover. So summing up all, your tower resistance characterizes the tower top voltage or VT or resistance. This is some figure जो शो कर रही है कि आपकी जो peak voltage tower की वो as a function of peak lightning current change हो रही है, and there is some relationship between the E and the IL, and it has been calculated for a typical 11 kilowatt line, और inductance जो हमने इधर 20 microhenry suppose की गई. तो आप देख रहे हैं कि आपकी जब resistance है 5 ohm है, तो वो बहुत ज़्यादा rapidly इंक्रीज कर रही है, और जब आपकी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है तो वो स्लोली इंक्रीज कर रही है. सो देयर सिमिलरली जब आपकी लाइटनिंग स्ट्रोक आएगी, तो अगर पर फेज में बैक फ्लैश ओवर आता है, तो दिस इज हाउ इट विल हैपन, एंड दिस इज योर एनी डिस्क इंसुलेटर, और लाइटिंग स्ट्रोक वो आपका जो कंडक्टर इधर आपका हैंग होता है वो टावर के आपके टॉप से कंडक्टर तक पहुंच गया. So due to the BFO, the voltage wave with substational amplitude and a very fast wave current is injected onto the phase conductor. आपका जो phase conductor है उसकी पीक ये थी, और आपका जो टॉप वोल्टेज है it is very high as compared to your phase conductor voltage. Now the next thing is the stroke to the earth wire, the stroke on the center of the earth wire between the towers, और जो stroke जो आपके tower top पे है ये बहुत ज़्यादा common है as compared to stroke to the earth wire. Because और जो एक और बात मैं इधर बताता चलूँ कि जो surge impedance है और जो normal impedance की tower की है तकरीबन एक जितनी होती है, जबकि जो सर्ज इंपीडेंस जो ग्राउंड वायर की है वो बहुत ज्यादा कम होती है. सो वोल्टेज राइज ऑन द अर्थिंग कंडक्टर will be there, but it will be less as compared to your tower. This is the equivalent diagram that how it will happen when there will be some stroke to the earth wire.
So there will be resistance of the tower to the earth. This one, inductance of the tower, and the surge impedance of the earth is involved here. The voltage waves produced by the current flowing along the earth wire will travel along the earth wire in both the directions from the tower struck. On reaching the neighboring towers, they will be partly reflect and partly transmitted. अब reflect कितनी होगी और refract कितनी होगी जब different towers पे वो travel करेगी तो it is another issue. इसके लिए आपको रिफ्लेक्शन कांस्टेंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जो रिफ्लेक्शन कांस्टेंट है वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो उसकी मदद से आपको पता चलेगा कि आपकी जो लाइटनिंग है उसकी वजह से वोल्टेज कितने इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ द अर्थ वायर. So it will also depend on the spacing of the tower. If the towers are very kept closer, then impulse will be reduced more quickly. क्योंकि रिफ्लेक्ट और डिफ्लेक्ट करने का टाइम बहुत ज्यादा कम मिलेगा, तो इसीलिए जो कम स्पेसिंग है दे आर मोर प्रेफरेबल एज कंपेयर टू योर लार्ज स्पेसिंग ऑफ द टॉवर. So how to reduce the effectiveness of the lighting stroke? First of all, tower footing resistance. जो peak of the stroke voltage है, it will reduce with the resistance of the earth, and or we call the footing resistance of the tower. So lower resistance load will be the peak of the voltage. Then the tower span, if we keep the span between the two towers small, then the die downing of the voltage impulse will be very quickly, because a small span, the reflected wave will come back quickly to the original struck point. If the lightning stroke falls at the top of the tower, then comparatively voltage will be more. If it falls at the middle of the earth wire, then the current will be relatively small. So what will happen if the span is 265 meter, and what will happen if it is 132 meter? It can be seen here. It is not mentioned from the figure 10 of your MS NIDO. Here it is very obvious that when the span is decreased, your reflection coefficient is much more changed. This is how your stroke current is changing with respect to tower voltage. ये जो मैं जिक्र कर रहा था, this is your earth wire, and this is the picture from the above side. From the above of the tower, कि जब भी इधर कोई स्ट्रोक आया तो इट विल ट्रेवल अलोंग द अर्थ लाइन, और ये आपका स्पैन है एक टावर से दूसरे के दरमियान, और जो ये ट्रेवल करेगी ये रिफ्लेक्ट भी करेगी, आगे रिफ्लेक्ट भी करेगी और डिफ्लेक्ट भी करेगी. जितने टावर्स करीब करीब होंगे वो जल्दी रिफ्लेक्ट करेगी और जल्दी वो डैमेज हो जाएगी एज कंपेयर टू कि अगर टावर्स बहुत ज्यादा दूर दूर है. नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो अर्थ वायर आप यूज कर रहे हैं ये कितनी हाइट पे होनी चाहिए, चूंकि जब भी फॉर एग्जांपल आपने देखे हैं कि अर्थ वायर यूज होती है नॉर्मली लार्ज बिल्डिंग्स में, तो जब भी हम यूज करते हैं तो जो उसकी हाइट हम अर्थ वायर की है वो हमने कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि जब तक हाइट आप कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जो प्रोटेक्टिव जोन है वो कितना है. फॉर एग्जांपल here you are seeing the dotted line which is showing the area of attraction. It means कि आपकी जो अर्थ वायर है ये डॉटेड लाइन तक एरिया ऑफ अट्रैक्शन है. अगर इसके इर्द गिर्द इस सर्कल में उसके पास अगर कोई लाइटनिंग इफेक्ट या स्ट्रोक आता है तो वो कैच कर सकती है. नाउ इट विल डिपेंड कि आपकी टावर की हाइट कितनी है
और आपने जो सर्ज इम्पीडेंस या अर्थ लाइन यूज किया उसकी हाइट कितनी है। तो नॉर्मली जो उसकी हम हाइट रख जो रेंज होती है वो हम इस तरह रखते हैं कि जो टावर की हाइट है उससे वो डबल एरिया ऑफ अट्रैक्शन उसका होना चाहिए। और नाउ द क्वेश्चन इज कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। इट विल डिपेंड कि हम कितनी रखते हैं, तो उसका जो सेफ्टी फैक्टर है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। So the area over which the power lines attract the lightning strokes is known as area of attraction, and it will depend upon the effective height of the earth wire. Length of the earth wire and the effective height is equal to 80% of the height of the tower. And this figure is showing कि जो आपकी जो नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैं ऑफ लाइटिंग अट्रैक्शन के इज इक्वल टू एरिया ऑफ अट्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय एन जी। और एन जी आपकी कितनी है कि लाइटनिंग फ्लैश डेंसिटी कितनी है आपकी। and this is you are seeing that this is the R, और आपका जो R है it should be equal to 2h, and this is your height of the tower, और this is showing your zone of attraction या area of attraction कि आपकी जो अर्थ वायर है इस सर्कल में अगर आपके पास कोई भी लाइटनिंग स्ट्रोक आती है तो वो उसको कैच कर सकता है। तो नाउ दिस इज योर असाइनमेंट कि आपकी जो टावर हाइट है नाउ लेट डिस्कस अबाउट सम असाइनमेंट कि फॉर एग्जांपल आपकी जो टावर हाइट है वो गिवन है और आपका GW हाइट भी गिवन है, और आपके जो केस 1 है उसमें कुछ एंगल भी गिवन है। फॉर एग्जांपल इट इज बिटवीन 22 to 30 डिग्री, और जो आपका केस 2 है उसमें वो कहता है कि आपका 30 to 40 डिग्री एंगल है। तो अब आपका जो एंगल है वो कांस्टेंट ही रहेगा। तो आपने जो अर्थ वायर है उसको डिजाइन करना है कि उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो ये हम एक आपको असाइनमेंट भी दूंगा, उससे आपको ये जो चीजें वो ज्यादा क्लियर हो जाए। Now let's see some problems related to it. For example, one of the towers of a transmission line with a single overrunning earth wire is struck by lightning. You have to drive an expression for the voltage which will be developed at the top of the tower during the period from the instant when the lightning stroke contacts the tower to the instant when the lightning voltage wave reflected back from the neighboring towers arrive back to the tower, and the lightning stroke currently is given by this formula. Here L is the inductance and the earth resistance is R, and the earth wire with the surge impedance is showing by Z. So we have the voltage at the top of the tower required, pole inductance, surge impedance of the earth wire, and the pole resistance. You can make this connection as you can see from the questions that voltage developed at the top of the tower. So lightning stroke is struck at the tower. So you can make this equivalent circuit. This is the resistance, footing resistance, and the inductance of the tower. And this is how your impedance is dividing into two halves. You can make this equivalent circuit to impedances on halves Z by 2, and R, and here will be some inductance.
So there are the two resistances in parallel. You can write it as the Z by 2. Now you take the equivalent resistance, and for our convenience, we have make this current into the other domain, into S domain. So we have taken the Laplace, and you know that e raised to power minus alpha t is equal to 1 over S minus this one. So there will be S plus alpha minus there will be 1 over S plus beta. So your ZS will be equal to Z by 2 into R plus SL in plus over R plus SL plus Z by 2, because these both are now taking as the parallel circuits, these two. So now we have divided it with the L. So there will be Z by 2L, and here there will be the L now, because you have also incorporate it into the other B is equal to IZ form. तो हमने इसको जो अपनी कन्वीनियंस के लिए ये जो फैक्टर है इसको हमने m सपोज कर लिया. So putting this value you will get this equation. So here you will get the voltage form. अब आपको पता है कि इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन करें तो it will be equal to a over s plus alpha plus beta over s plus m. So simplifying this equation, you will follow all these equations. Add and you will take the inverse Laplace to calculate the voltage, and you will get this expression. So this is now how your diagram is traveling. That is कि आपकी जो lightning stroke आई है वो इस point पे आएगी और इधर से reflect होके आपकी इस point पे जाएगी. Similarly, इस अगर point पे आती है तो there will be reflection on this point, and you will get the diagram like this. So after the one reflection from each tower, Vt will be equal to Vt plus beta 1 V1 plus beta 2 Vt. और अगर इक्वल स्पेसिंग हम अज्यूम कर लें दोनों साइड में तो बीटा 1 will be equal to your beta 2. So putting these values, you will get this equation. Then you have to calculate the maximum voltage developed at the top of the transmission line of the 20 kilo ampere. You have assumed that the voltage wave reflected back from the neighboring towers have the negligible effect, and there is some alpha and the beta coefficients as well. So before going into detail regarding the alpha and the beta coefficients, let's see that what are the alpha and the beta coefficients and how you can calculate if these are not given. But here the alpha beta are given, so you need not to calculate it.